Hi everyone, I'm Vidhi and welcome to my channel. So as you all had seen in my last video that we had left from Pangong and we had already crossed Kharu and Upshi. So this video is the continuation of the journey that began from Pangong. It's 4:30 right now and we are at Rumtse. So we are deciding to stop here today and we've got this beautiful campsite. The name is Northern Homestay and Campsite. So we'll camp here for tonight and the view from here is just very amazing, and also it's very cold here, and from Leh this area looks like more green and like more, like that the places like how tropical you all can say. Yeah, this place looks like more tropical and green. So I'll just show you all the place where we are camping tonight and the scenery around here. सो वी हैव पिच्ड आवर टेंट और अब हम हमारी कार पार्क कर रहे हैं. तो हम हमारी कार कुछ इस तरह पार्क कर रहे हैं कि हम उसे हमारे टेंट के बिल्कुल पीछे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है और हम नहीं चाहते कि हवा जब और रात हो और हवा जब और तेज़ हो तो आके हमारे टेंट पे लगे और हमें कुकिंग में भी दिक्कत नहीं होगी अगर हम गाड़ी हमारी ऐसे पार्क कर रहे हैं. तो अब कार पार्क करने के बाद हमारा सेटअप कुछ इस तरह है. पीछे कार है, आगे टेंट है और ये है पूरा नज़ारा हमारी कैंप साइट से. और now we'll fly a drone here because here the wind is very less comparing the other places where we went. And here there are also no restrictions for drone, so enjoy the drone shots.
So right now it's 6 p.m. and we have done setting up a tent. Here it is, and I just realized one thing, that there's a river right like besides our campsite. So I'll just, oh okay, so it's like not direct access, like there is a field and then you have to go that side. So I'll see if I can go now. If I'm able to go now, I'll show you all, and if not, then I'll show you all in the morning. Okay, so we need to, there is a tent in the car. This is the like fencing or whatever they say, and this field, we have to walk across this field, and there, that side is the river. So I don't think I'll go there now. I'll go there in the morning and I'll show. And the sun is starting to set now. And we are also the same problem, no electricity. So our phones will be uncharged again. And my phone is almost going to be dead right now. It's just 10% battery remaining, so I have to use wisely. So I'll meet you all right in the morning now, because we have decided to sleep early today and wake up early for sunrise and see and witness the sunrise. And yeah, that's all. And it's going to be an early good night today, because we'll sleep really early. My aunt is also not feeling well, so for dinner we are not having anything. We just made some soup right now, and we'll drink some soup and then sleep. So yeah, that's it. Good night for now. See you in the morning. सो अब मैं आपको जहाँ पे हम रूमसे में रुके थे, जिस कैंप साइट पे हम रुके थे, वहाँ का एक छोटा सा टूर देती हूँ। तो जहाँ पे हम रुके थे उसका नाम था नॉर्डर्न होम स्टे एंड कैंप साइट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास होम स्टे भी अवेलेबल है और कैंप साइट भी है इनके पास। तो होम स्टे जो है वो फ़िलहाल बंद है, क्योंकि अभी सीज़न है नहीं, ज़्यादा गेस्ट आते नहीं हैं, तो फ़िलहाल बंद है। और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस जो होम स्टे का है, जो कि अभी बंद है, और वो है उसका दरवाज़ा। एंड यहाँ पे साइड में फ्लावर्स है, फ्लावर्स के लेन बनी हुई है। एंड यहाँ पे है वॉशरूम और बेडिंग एरिया, जो कि जो कैंप करते हैं उनके लिए है। सो अंदर से ये वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, और इनके पास गीज़र तो अवेलेबल नहीं है, बट उन्होंने हीटिंग रॉड प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंड में गर्म पानी लगता है, तो वो है। और ये है पूरा नज़ारा कैंप साइट का। ये पीछे पूरा लैंड है, फार्म है, और ये सामने पहाड़, और वहाँ पे हमारी कार है जहाँ पे हमने कैंप की थी।